As we continue to grow with our grammatical lessons, today we have another important lesson, and that is subject verb agreement. Now, grammar is important because it gives you the opportunities that you can speak coherently, especially cohesively. Cohesion is the grammatical flow in your communication. When you communicate and it is cohesive, then it means that your sentences are grammatically correct. If there is no cohesion, then it means that there is a problem in grammar, in sentence structure, in punctuation, in spellings, and all these related concepts. So we have to be cohesive in our communication. There is a difference between cohesion and coherence. Coherence is psychological, while cohesion is physical. The physical writing that we have, when we look at the writing, so we see that whether it is correct or it is not correct. This cohesion gives beauty to our communication. Cohesion gives beauty to our communication, because when something is properly organized, that is proportional, that is systematic, then we consider it beautiful, attractive, captivating, enticing, wizarding, bewitching, and the people who are reading or who are listening to a cohesive communication, then they get impressed. That's why cohesion is one of the most important dimension of writing and speaking. Coherence is related to ideas, while cohesion is related to structure. Now, grammar is related to structure. Grammar is related to structure. Subject verb agreement provides you a structure that you have to go according to this structural position. We have more approaches, but 4 approaches are important to learning English or any other language. One approach is classic approach, and the method used by the classic approach, that is GTM, grammar translation method. The second approach that we have, that is called structural approach. Structural approach is the method used in structural approach that is ideolingual. The third approach is direct approach, and the method is also called direct. For example, you do not translate, you do not learn grammar, but you immerse yourself directly in the environment, and then you start learning that language directly. And the fourth approach is communicative approach. Communicative approach or communicative method means that the purpose is communication. The purpose is communication. The purpose is fluency. The purpose is to convey your message to the reader or to the listener without keeping in mind that whether the quality, the grammar, it is good or not. If you start communicating, if you start writing and speaking, one day automatically you will become professional. Our approach in safe online classrooms, that is more holistic. Holistic means that it is comprehensive. We use GTM, grammar translation method, which is part of the classic approach,
We also use a structural approach with the method of ideolingual. We use direct approach. Sometimes I'm now only speaking in English so that you listen to English and your ears understand English in a proper way. And finally, communicative approach, and I'm asking you again and again to write and speak in SAFE 2 to develop your communication skills, and this way your language will be excellent. So grammar gives us structural approach, GTM, grammar translation approach, and subject-verb agreement is one of the methodology that we understand structures. Now, how we can understand the structures? We have a subject and we have a verb. Verb and subject must agree with each other. For example, the verb is he. What should be the verb? The subject is he, so what should be the verb? So the verb should be goes, not go. If the subject is I, the verb will be go, not goes. So this agreement between subject and verb is highly essential. So please make a comment that I must apply structural approach so that my language is cohesive, and in this regard my subjects must agree with the verbs. Please make a comment. I must apply structural approach and to make my language cohesive and my subjects must agree with the verb. My subjects must agree with the verb. So my face may not be so visible, but my voice is there. So I see the first comment of Imran Khan. I must apply structural approach so that my language is cohesive, and in this regard my subject must agree with the verb, or my subjects must agree with the verbs. अभी मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ. अभी तक मैंने जो कुछ बोला, लैंग्वेज जो है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है. ये स्ट्रक्चर जो है ये साख्त क्यों होता है? मसलन हम घर बनाते हैं तो एक घर को हम एक ख़ास तरीके से बनाते हैं, एक ख़ास स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं. ये हम क्यों करते हैं? ताकि कोहिजन हो. कोहिजन, कोहेसिव. कोहिजन का मतलब है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ फिक्स हो, एक दूसरे के साथ लगे हो. मतलब ईंट जो है वो सीमेंट के साथ दूसरी ईंट के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हो. तो ये जो जुड़ना है, दिस इज कॉल्ड कोहिजन. इसके मुकाबले में एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंस. कोहेरेंस ये है कि आपका जो आइडियाज़ है उसमें फ्लो हो, उसमें जुड़ाव हो, उसमें जो है वो आपके आइडियाज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो. और कोहिजन ये है कि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो. अब ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत है. वी मस्ट नो द ग्रामर. इफ देर इज नो ग्रामर सो देन देयर विल बी प्रॉब्लम. क्योंकि कभी मैं कहूँ आई गो, अगर मैं कहूँगा आई गोज तो कितना बुरा लगता है. आई गोज जो है वो बहुत बुरा लगता है. ही गोज प्यारा लगता है. तो ये जो प्यारा लगना है, दिस इज कोहिजन.
और ये कोहिजन कहाँ से आएगा? ये ग्रामर से आएगा। अगर आप ग्रामर की गलती नहीं करोगे तो आपकी लैंग्वेज जो है बड़ी प्यारी होगी, कोहेसिव होगी, जुड़ी हुई होगी एक दूसरे के साथ। वो खूबसूरत तरीके से स्पेलिंग भी ठीक, पंक्चुएशन भी ठीक, फुल स्टॉप भी ठीक, टेंस भी ठीक, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे हो। सो दिस इज़ one of the important part of examination. Now, one of the tool that we give structure to our language, that is subject verb agreement. Subject verb agreement. Now, simply it is easy to understand. They come, he comes, वो आते हैं, वो आता है, वो के साथ आता, वो के साथ आते, प्लूरल के साथ। तो दे के साथ जो कम है, दे सब्जेक्ट है, कम वर्ब है। ही सब्जेक्ट है, कम्स वर्ब है। ही के साथ कम्स का आना और दे के साथ कम का आना। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जब भी आप सब्जेक्ट यूज करते हैं और उसके साथ जो वर्ब आता है, ठीक है, दैट वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। सो आई हैव गिवन यू नोट्स एंड विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. प्लीज रीड द नोट्स अगेन एंड नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. क्योंकि अभी हमारी क्लासेस का स्टाइल ये है कि आप नोट्स पढ़ेंगे और नोट्स पे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे. सो प्लीज राइट अ पैराग्राफ ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और लेट अस मेक इट मोर पॉपुलर. राइट अ पैराग्राफ ऑन Palestine Israel issue, of the current situation of Palestine. What do you think? इसमें मैं देखता हूँ कि आप वर्ब और सब्जेक्ट को कैसे जोड़ते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो प्लीज राइट फ्यू sentences on Palestine situation, current situation. You can also write on economy of Pakistan, or you can write on any other topic. But I want to see that how your verbs and your subjects are together. Please start writing.
Yes, please. So start writing on Palestine situation. Let me see how are your verbs. Verb and subject. You can write about the position of Pakistan. Okay. The position of Pakistan. Now I hope I am more visible. So Hassan Ali, Hamas, a militant group, attacked Israel on 7 October. So let's see the cohesion. इसमें हम कोहिजन देखेंगे. कोहिजन का मतलब यह कि इसका साख्त जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है. So Hamas Kama, a militant group attacked Israel on 7 October, which results in the killing of many civilians. अब रिजल्ट्स है या रिजल्टेड है, which resulted in the killing of many civilians. After the Hamas attack, Israel declared war against Hamas. As I am writing now, comma, many civilians died from both sides. So this is a subject verb agreement. इसमें क्या है? Hamas attacked, resulted. तो this is Hamas subject है, verb जो है that is attack and these things. So this is mostly correct. Hassan Ali, very good. Imran Khan, the fighting between Israel and Hamas, which was launched a surprise attack on Saturday. Saturday क्या है यार? Is the latest in the 7 decades of war and conflict between Israelis and Palestinians. Imran Khan, please. अब सैटरडे जो है वो कौन सा सैटरडे? ये सैटरडे, वो सैटरडे. जिस तरह के उसने 7 अक्टूबर लिखा है तो 7 अक्टूबर लिखो. 7 अक्टूबर 2023. गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ये जो अखबार में होता है ना सैटरडे वीक, ये गलत है. वो अखबार वाली लैंग्वेज आपने लिखी, एकेडमिक लैंग्वेज लिखी. द फाइटिंग बिटवीन इसराइल एंड हमास विच वॉज लॉन्च्ड एज अ सरप्राइज अटैक ऑन सैटरडे. इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि टाइपिंग करो. आप बहुत खूबसूरत लिखाई करते हैं लेकिन ग्रामर में आपकी प्रॉब्लम्स अभी भी है. is the latest in 7 decades of war and conflict between Israelis and Palestinians that has drawn in outside power. So it is not beautiful. There is no cohesion. इतना लंबा सेंटेंस तुमने लिखा. प्लीज मेक इट 2 sentences. इसको 2 sentences बनाओ. Cohesion. The conflict pits Palestinian aspirations for a state of their own against Israeli demands for security in what it has long regarded a hostile region. अल्फाज बहुत है. दिस इज कॉल्ड वर्बियाज और वर्बोसिटी. बहुत से अल्फाज मीनिंग मिसिंग. ये आप खूबसूरत सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे. इतनी ज़्यादा अल्फाज है लेकिन ये अच्छा है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आपने पिट्स लगाया है.
That is correct. Excellent. Sana Khan. Palestine and Israel have issues from many years, but now it has changed into a full-fledged war. Full-fledged, ED. ये जो फुल फ्लेज्ड होता है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो एडवांस और एडवांस्ड में फ़र्क नहीं करते. ठीक है, एडवांस जो डी है आखिर में और चीज़ है, एडवांस और चीज़ है. एडवांस नाउन है, एडवांस्ड एडजेक्टिव है. तो ये क्या है? फुल फ्लेज्ड, डी आखिर में लगाना है. फुल फ्लेज्ड वार. हाँ, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट आपका ठीक है. देखो ना, आपने लिखा पैलेस्टाइन एंड इजराइल हैव. पैलेस्टाइन इजराइल के साथ हैव आता है. इट हैज चेंज्ड, तो हैज इट के साथ हैज आएगा, पैलेस्टाइन इजराइल के साथ हैव आएगा. अ ग्रुप फ्रॉम पैलेस्टाइन हमास हैज यूज थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स. यूज नहीं, फायर्ड. यूज गलत वर्ब है, फायर्ड. अपने वर्ब को देखना है कि मैंने कौन सा वर्ब यूज करना है. And then Israel declared that we are at war. And then Israel declared that we are at war means that they are at war. क्योंकि ये इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट में we जो है वो they बन जाता है. ये जो ग्रामर आप सीखते हैं ना, इसको अप्लाई करें. Israel also claimed that Hamas will face its consequences and Israel will win. हाँ, Israel also claimed that Hamas will face its. So subject verb agreement आपका ठीक है. Subject और verb जो है agree कर रहे हैं. Excellent, very good. Now Sherawan. The Israeli-Palestinian conflict is a complex. अब ये देखो ना, is ये agreement है. Is a complex and multifaceted issue that has been ongoing for decades. Very good. Has been और is जो है, ये जो verbs आप यूज कर रहे हैं, ये subjects के साथ agree कर रहे हैं. Subject क्या है? Conflict, issue, ये subjects है. It primarily revolves, बिल्कुल ठीक है, revolves भी ठीक है, around the competing claims and aspiration of both the Israeli and Palestinian people. हाँ, इधर आपने डंडी मारी है बस. Peoples, people का मतलब है लोग. ये लिखो अपनी कॉपी में, नोट करो इसको. People का मतलब है लोग, Peoples का मतलब है अक़वाम. मसलन मैं कहता हूँ दुनिया के अक़वाम, तो मैं क्या कहूँगा? पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर मैं कहता हूँ दुनिया के लोग, पीपल ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान के लोग, पीपल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कौमें, पीपल्स ऑफ पाकिस्तान. अदरवाइज इट इज ओके. शकील. The people of Palestine has been suffering through the hands of Israel since 1967. Correct? Has been सही है. ये agreement है. Israel is one of the countries in Middle East. अब Middle East जो है ये proper noun है. तो M और E अपने capital लिखना है. ये proper noun है, ये common noun नहीं है, ये middle नहीं है, middle दरमियान वाले, या east नहीं है. मिडल ईस्ट एक बाकायदा रीजन है, एक प्रॉपर नाउन है. तो एम और ई कैपिटल. हु हैज एनेक्स्ड द पैलेस्टाइन. अब सारा तो एनेक्स नहीं किया है, मतलब ये आपका जो राइटिंग है ना, वो आप फैक्चुअल भी होना चाहिए. फैक्चुअल. सारा फलस्तीन इजराइल ने अभी एनेक्स नहीं किया. ठीक है. हैज कॉन्कर्ड या हैज एनेक्स्ड अ लार्ज एरिया और मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन एरिया. दरमियान में आपने कुछ लगाना है. सारे फलस्तीन को अभी कब्जा नहीं किया. करंटली बोथ ऑफ द कंट्रीज आर एट वार. कंट्रीज आर, ये सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट है.
However, Israel is very powerful than Palestine due to its economy and technology. On the other hand, Palestine is not doing great when it comes to economy and technology. बिल्कुल ठीक है. Subject verb agreement आपकी सही है. Excellent. The recent Israel and Palestine issue is complex and challenging. Hamas, Sunni Islamic Freedom Fighter Group, launched a flood of rockets attack on 7 October. They targeted the civilian population. As a result, more than 1,500 people were killed, including women and children. To anticipate the rocket attacks, Israel has an advanced Iron Dome technology that can anticipate short-range rockets in the air. In conclusion, there are casualties on both sides, so that the world leaders need to stand for the peace and counter the war. Correct? Excellent. Very good. इसमें कोहिजन है, कोहेरेंस भी है. इन कंक्लूजन ये वो लगा के ना एक अच्छा पीस ऑफ राइटिंग है. हाँ, पीपल्स ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन. यस, अगर आपका कौम का मतलब है, अगर लोग मतलब है लोग जो इंसान है, पर्सन्स, फिर आप पीपल यूज कर, पीपल आप यूज कर सकते, पीपल ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन. पीपल जो है वो बंदों को कहते हैं और नेशन जो है वो कौमों को कहते हैं. तो पीपल अगर जब सिंगुलर है तो इसका मतलब है लोग, जब प्लूरल हो जाता है तो इसका मतलब है अक़वाम. मॉर्निंग इफ अक्टूबर, इफ का क्या मतलब है? इफ अक्टूबर 7th, हमास पैलेस्टाइन resistant fighters for Palestine liberation attacked on Israel southern part through air by firing barrages of rockets on Israel and Hamas freedom fighters infiltrated by land and sea. It was great shock for Israel. वही इमरान खान वाला तुम्हारी भी बीमारी है, इतना बड़ा आपने सेंटेंस लिखा है, कोई सर पाव का नहीं पता कि क्या कहना चाहते हो. ये कितना बड़ा है, मुझे अभी तो इसमें फुल स्टॉप नजर ही नहीं आ रहा. किधर है फुल स्टॉप? इसमें इतने बड़े बड़े जुमले मत लिखा करे. बेशक मैंने आपको कहा है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिखे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना बड़ा कि इसका कोई पता ही नहीं कि बंदा क्या कह रहा है. प्लीज डिवाइड इट इन 2-3 sentences. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से. डू इट अगेन. इसको 2 या 3 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो. ओके गाइज, सो दिस वाज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसका आसान मिसाल मैं आपको दोबारा बताता हूं. ही के साथ गोज आएगा, आई के साथ गो आएगा. ही गोज, आई गो. इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. और इसके नोट्स, एग्जाम्पल्स, सारी चीजें मैंने आपको दी हुई है. सो प्लीज रीड देम. एंड वेन एवर यू राइट, when you write subject, subject क्या है? ही है, शी है, हमास है, पैलेस्टाइन है, इजराइल है, पाकिस्तान है, नईम है, ये सारी जो है ये क्या है? ये सब्जेक्ट्स है. तो हर सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा ये जरूरी है. नईम वर्ब लेगा, नईम गोज, नईम कम्स. ठीक है. पीपल जो है प्लूरल है तो पीपल वर्ब लेगा, पीपल गो, पीपल कम. ये अपने कॉन्शियसली देखना है ताकि आप गलती न करें. आई एम हैप्पी दैट यू पीपल 90% टुडे राइटिंग वाज एक्सलेंट. देयर वर वेरी वेरी स्मॉल मिस्टेक्स. अभी पैलेस्टाइन और इजराइल पे प्लीज़, जो पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने आपको नोट्स दिए हैं और कुछ लिंक्स दिए हैं, उसको पढ़े. आज आपने को देखा कि यार फलस्तीन पे इतनी दुनिया बोल रही है, मैं क्या लिख सकता हूं. ठीक है, तो पढ़ो. रीड टू राइट. प्लीज मेक अ कमेंट. रीड टू राइट. जब आप रीडिंग करते हैं
to see how it is written. You write the same way. जब आप रीडिंग करते हैं ना, किसी भी रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं कि नईम खान कैसे क्लास ले रहा है, मैं भी सेफ टू में इस तरह लूंगा. तो जब आप रीडिंग करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो देखो कि उस बंदे ने कैसे लिखा है, मैं भी उसी तरह लिखूंगा. Hamza Khan. The issue of Palestine is not a recent one, but it is rooted since World War I, when United Kingdom's Parliament issued. It was aimed to settle Jews. अच्छा, Jew जो है ये का प्रॉपर नाउन है, तो जे का जूस का जो जे है वो आपने कैपिटल लिखना है. जूस, ये जीव्स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जू, जू, जूस, जूस इन पैलेस्टाइन. Moreover, on the same conflict, several wars have been. Wars आ गया, have been. War has been. Excellent, Hamza Khan, very good. So, read to write. जब भी आप रीडिंग करते हैं तो ये देखो कि इस बंदे ने फ़लस्तीन पे कैसे लिखा है, मैं भी उसी तरह लिखूंगा. डॉन ने कैसे लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कैसे लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैसे लिखा है, बीबीसी ने कैसे लिखा है, मैं भी बीबीसी की तरह लिखूंगा. आप सिर्फ रीडिंग ना करें, उनका स्टाइल भी नोट करें कि वो कैसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं. तो इसी तरह फिर आप भी इंप्रूव करेंगे. So all the best. Now see you in safe essay classroom.